Everyone, please put your names in the chat box. Okay, so today what we are going to learn is Walter valuation model. Okay, today what we are learning is Walter's valuation model. Okay, so the theory part we will understand it. Okay, I will write the theory part later on. First, we will understand what exactly Walter wants to say. Okay, so everyone, please write down this question. Okay, so I want everyone to write down this question. Reliance earns ₹5 per share and is capitalized at rate of 10% and has a rate of return on investment of 18%. Okay, so according to Walter model, what should be the price per share at 25% dividend payout ratio? Is this optimum payout? Okay, is this is the question now. This was the question. Now we are going to solve this as per Walter. Okay, Walter's policy, Walter's valuation model. Everyone with me, guys? Everyone is with me? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I'm writing down the formula. V stands for value, market value. Okay. So D is dividend. D is dividend. Okay. Can you please write down the formula? D stands for dividend. Is that clear? Is that clear? R Yes, sir. stands for rate of return. Right. Okay. K stands for cost of equity. Okay. E stands for EPS, that is earnings per share. V stands for market value of share. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, what is the rate of return? What is the rate of return? I want quick answers. Huh? I want quick answers. 18%. 18%. क्वेश्चन में दिया आपको 18% है. ठीक है. What is the Yes, sir. EPS? What is the EPS? 25%. 25%. No, 25%. 5. EPS is ₹5. ठीक है ना? 5 Earns rupees. 5 per share. ठीक है. Yes, sir. So EPS is ₹5. Yes. And what is capitalization rate? इसमें से क्या चीज अभी बचा हुआ है? T is dividend, E is earning per share, R is rate of return. So what is capitalization mean? What does capitalization mean? Cost of equity. ठीक है. So capitalization rate is also called as the cost of equity. So here we will write cost of equity KE. ठीक है. So instead of KE कितना आ जाएगा? KE कितना आएगा? 10%. 10%. तो 10% का मतलब क्या होता है? 0.10. समझ में आया सबको? 10. समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन किया?
D plus R upon K E minus D. Yes, sir. ठीक है, अभी हम लोग को इसको सब्स्टिट्यूट करना है. We just have to substitute this. I am substituting it ताकि तुम लोग का screen change ना हो. So V is market value. You will solve, right? D is how much? How much is D? We need to find out. ठीक है, तो D कैसे find out करोगे? Dividend कितना है? Earning कितना हुआ? Earning कितना हुआ? 5. 5. तो उसमें से डिविडेंड कितना दिया? 5. उसमें से डिविडेंड कितना दिया? डिविडेंड कितना दिया? कितना दिया? बोलो. 5 रुपीज इंटू 25%. तो डिविडेंड कितना दिया? 1.25. रुपीज 1.25. अंडरस्टूड. So how will you substitute this 1.25 plus rate of return is how much? 0.18. Okay. E minus D is 5 minus 1.25. Okay. Divided by 0.10. And this final entire total divided by again 0.10. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Can we solve this? Can we solve this? Yes, sir. How we will solve now? मैं बताता हूँ. सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? ये ब्रैकेट को माइनस करो. 5 minus 1.25. कितना है आंसर? 3.75. Multiply by 0.18. Multiply by 0.18. 0.65. Divide by 0.10. 0.10. 6.75. Plus 1.25. 8, sir. Divide by 0.10. Divided by 0.10. 80, sir. समझ में आया सबको मैंने कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. Has everyone understood the calculation? Yes, sir. Has everyone understood? Everyone got 80 rupees is the answer. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes. सबको 80 rupees आया पक्का? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. I want something to do with this sum now. Okay. So हमें क्या करना है अभी? ये sum तो हो गया. According to this, this is done. Now, if my dividend payout changes to 50%, what will happen? Can you all resolve? Can you all resolve again? Can you all Yes, resolve? sir. Can you all resolve? वापस से solve कर सकते हो अभी? Yes, sir. बस तुमको Yes, dividend sir. payout change करके नया dividend आएगा. Right? Understood or not? Yes. तो dividend कितना आएगा अभी? ठीक है? I'm writing it over here now. Dividend is equal to dividend earnings. ठीक है? Earnings into dividend payout. ठीक है? तो earnings कितना है? 5 rupees. Dividend payout है 50%. तो कितना आएगा? 2.5 रुपीज. 2.5, sir. अभी वापस से इसको सॉल्व करेंगे. D प्लस क्या है? R अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के. तो D कितना है? 2.5 2.5. प्लस R कितना है? वही रहेगा 0.18 डिवाइड बाय 0.10. 5 minus 2.5 divided by 0.10. ठीक है? Understood? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, answer is 70. Okay. ठीक है? आया सबको? Right? Yes, sir. Okay. Now I am adding something more to this. I am adding more to this now. ठीक है? I am adding 75%. So can you resolve now? Can you resolve? Yes.
एवरीवन? अब मैंने Yes, sir. 25 के लिए किया, 50 के लिए किया, अभी आप लोग 75 के लिए करो। अब मुझे आंसर बताओ। Sir, 60 answer. Sir, 60 answer. एक मिनट। हाँ, तो डीपीआर जब हम लोग कितना था, तो 25% हमें कितना मिला? 80। 80. 50% 70, 70. for 75% 60. 60. Okay, so somebody please do it for 100. Sir, 50. ठीक है, and please do it for 0 as well. Do it for 0 as well. When DP ratio is 90. Sorry, DP ratio is 0. Sir, 90. 90. Yes, sir. ऐसा 90. एक second. Okay, 90 ना? Yes, everyone. ऐसा 90. Yes, So sir. Walter, as per this, we understand one thing. क्या क्या समझ में आ रहा है कि R क्या है? R is how much? 18, and K is how much? 10%. So when 10%. हाँ, so when क्या वॉल्टर क्या बोल रहा है कि जब मेरा रेट ऑफ रिटर्न बड़ा है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से। when the rate of retention, okay, what the Walter is saying is when the rate of retention or the internal rate of return is greater than the cost of capital, what is going to happen is price of the shares, okay, price of the shares is going to value of the shares is going to decrease as we give more dividends. This is what we are understanding. बात समझ में आई है क्या? When R is greater Yes, sir. than cost of equity capital, when the rate of return is greater than cost of equity capital, ठीक है? So the firm को क्या करना चाहिए यहाँ पे? What should the firm do? फर्म को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? What should the firm do? Should it give 0% or should it give 100%? Should it give 0% or should it give 100%? 100%. अरे तो उसका प्राइस का शेयर गिर जाता है ना, शेयर का प्राइस गिर जाता है, 0%, sir. तो 0% लेना चाहिए ना। 0%. समझ में आया? So when R is greater than Yes, sir. KE, what is Walter trying to say is that have a zero payout. Understood? Is that understood? Everyone, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, क्वेश्चन में sir. क्या पूछा था? Is this the optimum payout? Now, can you all answer the question? Is this the optimum payout? इस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? खाली 25% था, 25% था। So can this be the optimum payout? Yes. As per this, what should be the optimum payout?
ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए? 0 sir. 0 होना चाहिए. Has everyone Yes sir. understood? क्यों 0 होना चाहिए? Because it maximizes value of share. समझ में आया सबको? Situation number 1 is clear. Is the situation number 1 clear? Yes sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now coming to situation number 2. Okay. I want everyone to resolve. ठीक है, अभी जो मैं पैरामीटर्स चेंज करूंगा फिर से तुमको रिसॉल्व भी करना है. ठीक है, अभी लेकिन शॉर्टकट में हो जाएगा थोड़ा. यू विल अंडरस्टैंड. सम सॉल्विंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. नाउ आई एम चेंजिंग दिस बोथ ऑफ दीस टू 2. Is that clear? Is that clear? Yes sir. Now here what you are going to solve? What you are going to solve? Dividend payout 0, 25 and 100. Don't solve 50 and 75. 0, 25 and 100. समझ में आया सबको क्या करना है? Yes. Yes, sir. Right. Now how you will solve now? Just write down that rate of investment is 10%. ठीक है, and then solve the sum. If the rate of investment is 10% and then solve the sum of it. So then what will happen? Then what will happen? The second situation will happen. R is equal to K. Is that understood? Yes sir. ठीक है, start solving. Sir 50. हाँ पूरा कंप्लीट कर लो. 25%. पूरा कंप्लीट कर लो. Yes. पूरा हो गया तो बोला. Are you all done? Yes, sir. Done, sir. Done. रीलॉग इन कर लो. के लिए आपको आया 50 रुपीज
और क्या किया था आपने? Yes, 25 yes, sir. और 25. आपने 100 भी किया था। Yes, sir. तो इससे मतलब क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन गाइस? इसका इंटरप्रिटेशन क्या समझते हो तुम लोग? सर रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है ना, इसलिए सेम ही अमाउंट का प्राइस बढ़ेगा इंक्रीज में। नहीं, तो इट विल बी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ शेयर यस सर, विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट। तुम दो डिविडेंड दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। तो यू आर indifferent over here. So Walter model valuation model explains that you can be indifferent because your value of share remains constant irrespective of you give dividend or don't give. Getting it? Getting it or not? यस सर। Yes everyone. समझ में आया सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है. Now do one thing. Okay. Change this to 8% and resolve again. Change this to 8% and again resolve. Change this to 8% and again resolve. समझ में आया ना क्या करना है? यस समझ सर। में आया ना? इसको 8% में कर दो खाली। यस। अभी अपना नया सिनेरियो क्या हो जाता है? नया सिनेरियो क्या होता है? नया सिनेरियो क्या है? 0.08। क्या 0.08? आंसर? सर रेट ऑफ रिटर्न। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपना सिनेरियो क्या हो रहा है? सिनेरियो रेट ऑफ रिटर्न सर इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज द थर्ड सिनेरियो। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। व्हाट इज द रिजल्ट? फर्स्ट का रिजल्ट मैंने डिस्कस किया, सेकंड का रिजल्ट डिस्कस किया, अब मैं थर्ड का रिजल्ट डिस्कस करूंगा। तुम लोग आंसर्स निकालो। मेरे को वही सेम आंसर चाहिए, 0, 25 एंड 100। ठीक है, 75 और 50 भी निकाल सकते थे लेकिन नहीं चाहिए, तो मुझे पता है क्या आने वाला है। तो गेटिंग इट ना एवरीवन? यस सर। भूमि यस सर। अंडरस्टूड ना? अरुंधति, प्रदीप, यस सर। आयुब, दुर्गा, Yes, sir. समझ में आया ना सबको? जिग्नेश, नीरज, Yes. राजेश, Yes, sir. समझ में आया ना सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछो। ये फर्स्ट सम है और इसका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्नेहा, सूरज, सिद्धांत। हाँ सर, ट्राई कर। नहीं, समझा कि नहीं समझा वो बताओ। कोई डाउट रहेगा तो तुरंत पूछो अभी। कोई इसमें कोई समझ में नहीं आ रहेगा चीज को। श्योर सर। So we have solved the sum 3 times, in fact 15 times आइडियली देखने जाएंगे तो। 5 डीपीआर थे फर्स्ट वाले में, 5 डीपीआर चेंज किए थे और रिटर्न चेंज किया हम लोगों ने 3 बार। बराबर ना? यस और नो? सेकंड सम में डीपीआर हमने तीन ही लिए थे। थर्ड में भी डीपीआर 3 ही बार ले रहे। भूमि आंसर बताओ ना 0% के लिए। 8 सर।
सर 25% के लिए 42.5 आ रहा है आंसर, और 100% के लिए 50 आ रहा है आंसर। 50। यस सर। जीरो के लिए सर 0 के sir. लिए 8। कितना आ रहा है? सर 40 आंसर। ओके, क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एनी इंटरप्रिटेशन? एनी इंटरप्रिटेशन? सर सब में डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफर कर रहा है। सब में डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफर करता तो है, वही तो दिया मैंने, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंटरप्रेट क्या कर रहे हो तुम इसमें? जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे तुम डिविडेंड देते जाओ तुम्हारा वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना तुम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो उसमें तुम्हारा वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, व्हाट वी कैन से, इट शुड बी व्हाट काइंड ऑफ अ पे आउट? बोलो, व्हाट शुड बी द पे आउट? 100% ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? एज पर दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ हियर यू सी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग ना। इफ यू सी दिस इज इंक्रीज्ड ओवर हियर, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग इट क्लियर और नॉट? When it is 100% it is reduced, but here it is maximum. Got it? The value of share यस सर। is maximum. So this is the theory of Walter. Is that clear? Is that clear to all? What is Walter's theory? Yes, sir. Understood? Walter's theory, when यस rate of सर। return, now you have to write this. ये theory है उसका, वो लिख लो, ठीक है? इसके बेस पे हम लोग सम करते हैं। मैंने तुम लोग को सम की बेस पे थियरी बताया। अंडरस्टूड? पहले हमने सम किया, फिर हमने थियरी समझा। तो थियरी क्या बोलता है, व्हाट इज वॉल्टर से, that when rate of return is greater than cost of equity, you should have zero payout. That is the optimum payout. You should maximize the value of shares. Second, when rate of return is equal to cost of equity, you should stay indifferent, and since the value of share is constant. When the rate of return is less than cost of equity, you should have 100% payout. Do not retain any dividend payout to the what do you say, shareholders, because value of the share is maximum if you pay the dividend. Is that clear? यस सर। ठीक है? Clear with that? Everyone is clear? Walter's valuation of dividend. Okay. Have you written this? यस सर। So basically these are the answers to optimum payout. अगर कोई क्वेश्चन में optimum payout पूछा रहेगा तो हमेशा ये कंडीशन चेक करने का कि क्या है, R greater than KE है या R less than KE है। अगर R greater than KE है तो zero payout will be the optimum payout. अगर R less than KE है तो 100% will be the optimum payout. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. ठीक है? So now I will give you Yes. one sum. ठीक है, अभी हम लोग सम करेंगे। तो सम इज वेरी सिंपल, अर्निंग्स of
the company. Okay, so it is 5 lakh rupees. Okay, then dividends paid is rupees 3 lakhs. Okay, the number of shares outstanding. Okay, is 1 lakh. Price earning ratio is 8, and rate of return is 0.15. Okay, so yes, so question is, are you satisfied with current dividend policy of the firm? What should be the what should be the optimum payout? Is the question understood to everyone? Is the question understood to everyone? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? अभी अर्निंग्स ऑफ द कंपनी क्या दिया है? 5 लाख दिया है। नॉर्मली रुपीज में दिया था मैंने 3 रुपया। अब निकाल सकते हो कि नहीं तुम लोग? कैन यू फाइंड आउट इन रुपीज? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर? एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इज Shares. दैट क्लियर? आउटस्टैंडिंग वही Yes, भी है। sir. इज दैट क्लियर? कैन यू कैलकुलेट? Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, Number of shares. डीपीएस। तो डीपीएस है, ये डीपीएस का फॉर्मूला हो गया। तो लिख लो, हाँ, सारे फॉर्मूला जो भी मैं तुमको दे रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है? गाइस तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? यस, Yes, sir. पक्का ना? सब समझ रहा है ना? कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो, हाँ। स्टॉप मी देयर एंड देयर इटसेल्फ, बिकॉज ये टॉपिक खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इसके बाद दूसरा इसके इससे रिलेटेड कुछ आने नहीं वाला है, ठीक है? तो इसके एमसीक्यूज जो मैंने अभी बताए वो उसके एमसीक्यूज है, हाँ। ये इसका एमसीक्यू का पार्ट हो गया, समझ रहे हो? और ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन का पार्ट, कि अगर मैं Yes, तुमको sir. कुछ क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन हो गया कि तुमको रेट ऑफ रिटर्न इतना दिया है, ठीक है, डी इतना दिया है, ई इतना दिया है, तो आंसर क्या आएगा? सिंपल।
यस, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, इसमें डीपीआर कितना दिया है? डीपीआर की जरूरत है यहाँ पे? यस, गाइस, मास्किंग वाला क्वेश्चन, इसमें डीपीआर की जरूरत है यस क्या? सर। डीपीआर की जरूरत है यहाँ पे? डीपीआर की जरूरत है क्या? डू डीपीआर नीडेड? डिविडेंड payout ratio, is it needed? Give me an answer, yes or no. Yes, भूमि, यस सर। डीपीआर चाहिए हमको यहाँ पे? डू यू नीड डीपीआर? डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए तुमको? यस सर। क्यों रिक्वायर्ड है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन है ना अपने पास? ई और डी मिल गया ना, तो डीपीआर की जरूरत क्या है? डीपीआर से हम लोग निकालते हैं ना। लास्ट जो सम था यहाँ पे, इन दिस पर्टिकुलर सम, 5 रुपीज ईपीएस वाज गिवन, तो डीपीआर मिला तो तुमने डिविडेंड निकाला। अब इस सम में तो ऑलरेडी निकाल लिया ना, ईपीएस निकाला, डीपीएस निकाला, तो डीपीआर की जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर तुम लोग को यस चाहिए सर। सॉल्व करना, तो यू कैन डू दैट। तो डीपीआर का फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड, ठीक है, डिवाइड बाय अर्निंग्स और इनटू नहीं। 100, so you'll get the answer. Do this. कितना आ रहा है? ये गलती से मुझे 30 लाख दिया है शायद। 30 लाख ही है क्या? 3 लाख है। डिविडेंड पेड 3 लाख है, 3 लाख से 60 आ रहा है। 0.6 रहेगा। 3 लाख से, वो 30 नहीं है, 3 लाख से। यस सर। 3 लाख डिवाइड बाय अर्निंग 5 लाख है। कितना हो रहा है? 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है? 60, यस 60%। सर। यस सर। बराबर, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। समझ में आया ना तुम लोग को कैसे निकाला मैंने? बट यस इसकी सर। जरूरत थी नहीं सम में, इसलिए मैंने नहीं किया था इतना टाइम तक। यस जस्ट फॉर सर। अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई शोड यू। ठीक है, अब आंसर तो बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म? वैल्यू कितना आ रहा है शेयर्स का? सर ईपीएस का बोल रहे हो आप? क्या क्या? ईपीएस नहीं का वैल्यू पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ। वी का आंसर पूछ रहा हूँ, वी। तो सॉल्व भी करोगे ना, ई डी मिल गया। ठीक है, अभी तुमको सॉल्व करना है ना। हाउ विल यू सॉल्व? हाउ विल यू सॉल्व दिस नाउ? यू हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तुम लोग सॉल्व क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारे पास तो है ही नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तुम्हारे पास? यही है तुम्हारे पास? नहीं सर। तो फिर ओ नहीं सर। कर सकते ना। तो ई है तुम्हारे पास, ई मिला। ई कितना है? ई कितना है तुमको? 5। सर यस सर। 5। डी 5। कितना है? 3। 3। 3। ठीक है, अभी हम लोग के ही चाहिए, के ही नहीं पता है, तो इसमें मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। आर कितना है? 15%, दैट इज 15% सर। 0.15। ओके, 0.15। we'll find the KE now. जब KE नहीं दिया रहेगा लेकिन P रेशियो दिया रहेगा। ओके, P रेशियो, ओके, इफ इट इज गिवन, ठीक है, तो P रेशियो का फॉर्मूला होता है 8%। 1 8 अपॉन है। के। P रेशियो का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन के। तो के का क्या होगा? 1 अपॉन पीई रेशियो। अंडरस्टूड? यस सर। यस अंडरस्टूड। सर। तो के क्या है पता यस चलेगा सर। अभी? के मालूम पड़ेगा? हम्म। पी रेशियो कितना दिया यस सर। यस सर। है? 8 दिया है, तो 1 डिवाइड बाई 8। 8। ठीक है, तो उसको परसेंट में, 0.125। हाँ, तो 0.125, तो उसको परसेंट में लिखो ना। परसेंट में कितना होगा? 12.5।
Yes, sir. 20.5 सर. ठीक है, समझ में आया? समझा अभी? Yes, Yes sir. sir. ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका v निकाल के दे सकते हो मेरे को। Yes sir. और इसमें अभी एक और चीज, पहले एस्टिमेट लगा लो v निकालने के पहले, कौन सा ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन ke? यस और नो? Yes, sir. अभी v निकालो, फिर मैं बता दो वो क्यों बोला मैंने। पाँच 0.15 12.5 E also model 5 minus D also 5 minus 5 into 0.15 upon 12.5 plus 5 upon upon सर 0.4 क्या 0.4 गलत है? some mistake which you are doing, some mistake which you are doing, यस सर. सॉल्व करो उसको। मुझे लगता है मुझे लिख के ही देना पड़ेगा। d is सर 3, मैंने ई गलत ले लिया था. वही बोल रहा हूँ। r अपॉन के, r कितना है 0.15 डिवाइड बाय 0.125, 5 माइनस 3 अपॉन 0.125। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, दे दिया मैंने लिख के। फिफ्टी 59.2 सर आंसर. 59 2. रॉन्ग, आंसर शुड बी 43.2। एक बार वापस से सब लोग चेक कर लो। सर इट्स 43.2. Yes. Okay, now tell me what should be the optimum payout? What should be the optimum payout? Anyone?
आर इज ग्रेटर देन के है ना, तो क्या होना चाहिए? The 43.31. 40. आंसर तो राइट है. माय क्वेश्चन इज आर इज ग्रेटर देन के, सो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट? भूल गए तुम लोग? ये देखो जीरो 0 ना, so you will write the मैक्सिमम final वैल्यू. answer. Yes, so the max optimum payout should be 0. Final answer you should write. Is that clear? यस सर. Just write the final Yes, answer sir. and take a break of 5 minutes.
Can we do the sum? Can we do the sum? Yes, can we do the sum? Yes, people. Yes, sir. सम कर सकते हैं ना? चलो स्टार्ट करो फटाफट Yes, sir. जल्दी. पहले E निकालो, D निकालो. सेम लास्ट सम में जो किया था फॉर्मूलाज. ये देखो 1 और 2. ठीक है, उससे E और D निकालो एंड देन सॉल्व द सम. और ये भी निकालो. क्या फॉर्मूला दिया था ये वाला? KE वाला, PE रेशियो का. दिस वन, KE is equal to 1 upon PE रेशियो. ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग क्विकली. 5 मिनट्स है, सॉल्व करो.